बर्नौलीज थ्योरम बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट स्टेट्स दैट the amount of energy flow या energy per unit कौन कौन सी एनर्जी रही होंगी बेटा? बेसिकली यहां होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. पर यूनिट वॉल्यूम it states that amount of energy per unit volume. कौन कौन सी एनर्जी? A fluid have three types of energy: kinetic energy, potential energy and pressure energy. Per unit volume remains constant. During the flow of ideal fluid. क्या कह रहा था? किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम always remains constant. You may also say here amount of energy means total energy here. Instead of amount of energy, you can also say total energy per unit volume remain constant. Say a liquid is flow between 2 points like that. A liquid is flow between point A and B. This point is A here. This point is B. A, B, and a liquid is flow in this direction, A to B, A to B. Both the points have different heights from their base ground. Say, point A have height h1, point B have height h2. Now, all of you know better, liquid flow from high pressure to low pressure. That means P1 must be greater than P2. इस पॉइंट का प्रेशर है बेटा P1, इस पॉइंट का प्रेशर है P2. अगर लिक्विड A से B पे जा रहा है तो कब जा पाएगा? जब A का प्रेशर ज्यादा हो. That means P1 is greater than P2. P1 is greater than P2. Height h1, height h2. Area of cross section. You can consider A1, A2. Let velocity V1, यहाँ पे जो लिक्विड एंटर कर रहा है दैट्स वेलोसिटी इज v1 एंड जो लिक्विड लेफ्ट आउट कर रहा है वेलोसिटी इज v2. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो. अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटर्ड इज m1, अमाउंट ऑफ लिक्विड लेफ्ट आउट इज m2. लेट डेरिवेशन फॉर द सेम, लेट दैट इज जो हमें प्रूव करना है. Kinetic energy per unit volume 1/2 rho v square. Potential energy per unit volume rho gh plus p is a constant. That's we have to put derivation for the same. ये हम लिख देंगे. Let us consider a liquid flow from A to B as shown in the diagram. Simple. Let the fluid flow from A to B, A to B as shown. Then, अब जो हमें पता है, क्या पता है हमें? According to equation of continuity, for ideal fluid,
A1 V1 must be equal to A2 V2 is AV. One thing, A1 V1 A2 V2 के इक्वल होगा और AV होगा. Also, one more thing, mass is density into volume. Volume is area into length. Mass can be written as density into area into velocity into time. Now here, बेटा आइडियल फ्लूइड अगर है तो जितना लिक्विड ए पॉइंट पे एंटर करेगा उतना ही बी पे बाहर जाएगा, पाइप में तो रुकेगा. जितना एंटर करेगा लिक्विड उतना एक्सर्ट करेगा. दैट मींस M1 मस्ट बी इक्वल टू M2. आइडियल फ्लूइड है, ρ1 ρ2 के भी बराबर होंगे. ρ1 इज ρ2 ऑलवेज. हालांकि ये लिखने की जरूरत ना भी पड़े क्योंकि हम इसी सेंस में कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है M1 मीन्स रो A1 V1 T, M2 रो A2 V2 T, और ये इक्वल है. तो M1 इज इक्वल टू M2. ध्यान करें मैंने अब यहां से रब कर दिया है. M1 is equal to M2 is M and is rho AVT. Now, kinetic energy at A. Kinetic energy at A. Kinetic energy at A. A पे kinetic energy 1/2. इसको यूं लिखते हैं 1/2 mv1 स्क्वायर. 1/2 mv1 स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 इक्वल है, वेलोसिटी अलग है. काइनेटिक एनर्जी एट बी E2 1/2 mv2 स्क्वायर. हमें क्या प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट. कैसे निकलेगा? पहले ए पे एनर्जी निकालेंगे फिर बी पे निकालेंगे. चेंज इन एनर्जी, सो डेल्टा ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी E2 माइनस E1 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. नाउ काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो गया. नाउ वी गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एट ए. ध्यान करें, पोटेंशियल एनर्जी एट ए. पोटेंशियल एनर्जी एट ए U1 mgh1, क्योंकि M1 M2 इक्वल है, M है. पोटेंशियल एनर्जी एट बी U2 mgh2. So what's about the change in energy? Delta E, change in potential energy, mg h2 minus h. अब लिक्विड अगर ए से बी पे जा रहा है तो प्रेशर इज डूइंग सम वर्क. अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन. वन मोर थिंग, यही कर देता हूं. मास को मैं यहां लिख देता हूं फार्मूला, वहां ध्यान ना रहे. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ. लेंथ मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम. इसी के अंदर आ जाएगा, यहां से हटा दिया. डेल्टा यू एम जी एच टू माइनस एच वन. ऑल्सो अमाउंट ऑफ वर्क डन to displace the fluid from A to B is W. वर्क डन कौन कर रहा है? प्रेशर. अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको ध्यान होगा क्या होता है? PV. अमाउंट ऑफ वर्क डन इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दैट इज डेल्टा P V. Change in pressure into volume. What is the change in pressure?
P2 minus P1 into वॉल्यूम, वॉल्यूम AVT अभी बताया मैंने, डेल्टा PV, ये V बड़ा है, बड़ा वॉल्यूम है, A वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ AVT. So according to work energy theory, वर्क एनर्जी थ्योरम, बट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल, नेट चेंज इन एनर्जी डेल्टा E प्लस डेल्टा U. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, P2 minus P1 AVT is equal to delta E 1 by 2 M V2 square minus V1 square plus mg H2 minus H1, or we get P2 minus P1 AVT is equal to 1 by 2 is not common, M is common, M is common या डायरेक्टली लिख देते हैं कोई, 1 by 2 M की वैल्यू रो AVT V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो AVT G H2 minus H1. AVT cancel out from both sides. Open the bracket, we got P2 minus P1 is 1 by 2 rho V2 square 1 by 2 rho V1 square rho G H2 minus rho G H1. Rearranging the term beta, 1 वाले एक साइड 2 वाले एक साइड, that becomes P2 plus half rho V2 square plus rho G H2 is equal to, बड़ा ये चेंज इन प्रेशर P1 माइनस P2 लिख देंगे, यहाँ पे P1 ज्यादा है बेटे, P1 इज ग्रेटर देन P2, सो इट इज P1 माइनस P2 इन एवरी ऑफ द इक्वेशन. ये हमने रूटीन लिख दिया कि हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं. यहाँ पे ध्यान रखेंगे हमने प्रेशर किसको ज्यादा माना है, P1 इज ग्रेटर देन P2, सो इट इज दिस एंड इज 1 P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर plus rho G H1. Rearrange the terms, hence proved. यही प्रूव करना था. जितनी टोटल एनर्जी पहले है बेटे उतनी ही टोटल एनर्जी बाद में, यही हमें प्रूव करना था. P2 V2 H2 यानी टोटल एनर्जी जितनी बाद में उतनी ही, जितनी B पे उतनी ही A पे, दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज ऑलवेज ए कांस्टेंट.